there are two phases where we have just confronted during the period. One was pre-lockdown period, which we call as the first lockdown, because after August 5th, we have a very, very big challenge was before the state, before the erstwhile state, that we have to come out from that turmoil, because the whole state was locked down, and network communication was completely blocked. तो वो हमारे लिए सबसे पहला चैलेंज था। मेरे ख्याल से वही मेरी एक्सपीरियंस, वही हम सब लोगों की एक्सपीरियंस थी, जो हमारे फेज 2 में, जो हमारा लॉकडाउन 2 जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, जो कोविड वाला लॉकडाउन है। सो दैट वाज एन एक्सपीरियंस व्हिच वी कैरीड टू द कोविड लॉकडाउन। हाँ, कोविड में सिर्फ एक प्लस पॉइंट जो हमारे पास था कि दैट वी हैव द टेलीफोन कम्युनिकेशन था, वी वुड कांटेक्ट टेलीफोनिकली टू आवर स्टूडेंट्स। ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू वर्क विद 2G नेटवर्क। अब ये समझिए 1.5 साल हमारे इस यूटी में 1.5 साल हमारे बच्चों को हुआ, दे हैव नेवर कम टू द स्कूल। हमारे टीचर्स शाई थे, टेक्नोइंग नहीं थे, जो हमारे टीचर्स के पास इंटरनेट फैसिलिटी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उसमें उन लोगों को ऑनलाइन टीचिंग का जरा पर भी कंसेप्ट नहीं था। तो हमारे बच्चों की तो दूर की बात है। वी हैव कवर्ड, अगर आप क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला को रिप्रेजेंट करूंगा, being the border area of the whole, out of the 22 districts that we have now, Leh and Kargil has been separated, a separate union territory. Now the J&K Kashmir division means 10 district, and Jammu division 10 district. both the divisions, they have the technology, वो जो 2G का था, वो दोनों जगह 2G का ही नेटवर्क था। तो जो हमारा लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हुआ कोविड वाला, तो थोड़ा सा हमारे पास जो था वो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस था, ये कि हम लोगों ने असाइनमेंट्स 45,000 असाइनमेंट्स होम डिलीवरी कर दी थी पिछले बार। और जो आपका जो एक स्लोगन था, जो मुझे दिल को मुझे ही नहीं बल्कि पूरे जो आपके अरबिंदो सोसाइटी के साथ 2 साल से 3 साल से जुड़े हैं, क्योंकि मुझे वो भी दिन याद है जब आपके लोग जो पहली बार आए थे J&K स्टेट में, तब कुछ ही दिन हम लोगों ने उनके साथ काम किया। लेकिन मुझे आज भी याद है कि जीरो इन्वेस्टमेंट वाला स्लोगन जो था वो पूरे वैली में फैल गया था, जीरो इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है। एंड वी हैव प्रूव्ड इट। My profile, my experience, and my work that I have done during the COVID period, it has proved that without investment, not a single penny has been invested by the the government or the district administration, because there was already turmoil. How can we claim? I can quote one example there. When we thought that let us go to that, out of these, I will talk, when I will talk in reference to my district Baramulla, not for the whole state. So in my district, near about there are 1 lakh and 6,000 children who are studying in class KG to 12th. Out of that, we were supposed to target those students, almost 45,000 students who have these mobile facilities, internet facilities. Rather, we can say that we can go for these online classes through Google Meet, or we can say Zoom classes. But rest of 50,000-60,000 students who can't be connected, we were thought, let us go for distribution of assignments. So we put a proposal to the district and the state administration, and that we need funds for that, and it tuned to the amount of rupees 47 lakh rupees for one. I'm talking of only one district. But that was not possible, because we have been trained by the Aurobindo zero investment. So we thought, how can we just distribute the study material and assignments and conducting these tests offline? I'm talking of offline, because my concern is online, not offline. So since I was looking at the different areas, so that was the challenge where my role came into, and I just started these Zoom meetings with the HOIs, a daily basis, taking in my officer, who is the chief education officer, used to say that are we ready to work on Sundays? So I told, मैंने कहा कि sir, your slogan is 24/7. That means we have to work for 24/7. We have not taken a single leave during the period. We have not missed even the Sundays also. So we started contacting these students through teachers, by virtually first motivating them that we have to go for fundraising. So our teachers, what they did a very good job by donating printers, paper rims, and coming to the schools, getting these assignments printed, preparing the study material, preparing the question bank, and then evaluation tool, designing these evaluation tools subject wise, class wise, and then distributing it at the doorstep. That was a big challenge, madam. It needs a lot of Yes. energy, a lot of money, a lot of Mm-hmm. manpower and resources. But I can assure you on this platform that not a single penny was being invested on that.
that particular area. And by the grace of God, we were able to distribute at least 40,000 assignments, study material to the students at their doorstep. We have done a very good job by starting, because our HOIs, our zonal education officers and chief education officer who is looking at the administrative side, first motivating the administration. We started with 3 persons: me, my assistant computer programmer, and our chief education officer. We started motivating that, let us, can we do it, can we go for online education using the zoom application. I too was not knowing Zoom. Then we started, it was a very big task to first to motivate HOIs and head of the institutions and these officers. It took us almost 5 or 10 days to think that can we do it. Later on, now the figures, the details which we have at the state and the national level, the Niti Aayog has clearly felicitated as even being the aspiration district. I was in charge of these online classes and the distribution of study material. This was the first area. And even at some places, we motivated the teachers to go for purchase of these mobiles from their salary. Some teachers did it. So first job was motivation and training of HOIs. First, we asked them how to install these Google platform, digital platforms, and then using these. Then second was that we have to motivate the teachers that how they can use these Android application, उसमें करना है, फिर कैसे हम Google Meet करेंगे, even WhatsApp conference call भी सिखाना पड़ा. तो ये सारी चीजें जो हम लोगों ने की है, it was a well planned, well strategized, with the intention that first, if we can motivate the HOIs, then only we can just motivate the teachers, who in turn will trickle down. ये तो ये cascade mode में हम लोगों ने किया. तो वो हमारा पहला पॉजिटिव स्टेप था. लेकिन दूसरा स्टेप जहां हम लोग स्ट्रगल कर गए, वो ये था कि जब HOIs को टीचर्स मोटिवेट करने पड़े, तो फिर दोबारा हमारी इंटरवेंशन, सर कहीं बात समझ में नहीं आई, सर फिर दोबारा से इनको बोलिए. बट एक ट्रेंड बनी, ट्रेंड सेटिंग हमने कर दी. ऑलरेडी फेसिंग इकोनॉमिकल क्राइसिस हमारे कंट्री की हैं, तो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट लिमिटेशंस, जो हमारी सारी लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज है, तो वी हैव टू एटलीस्ट फोकस ऑन दी जीरो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. ये तो हर जगह मुझे लगता है ये स्लोगन जो है ना, ये घर घर पहुंचना चाहिए. हाउस होल्ड में भी जीरो इन्वेस्टमेंट. वही जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है उसको रीयूज करें, हमारे पास जो माइंड है इसको अप्लाई करके इनोवेशंस करें, ताकि कहीं ना कहीं एक टीचर की क्रेडिबिलिटी जो खत्म हो रही है वो रेस्टोर हो जाए. और दूसरा, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप लोग अरबिंदो सोसाइटी वालों ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया हमको, जहां हम लोग अपना आइडियाज, अपने ओपिनियन, अपने व्यूज जो है शेयर कर सके. मेरे ख्याल से ये एक रिलेशन जो है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो आपस का जो रिश्ता है, ये मुझे लगता है वी नीड टू स्ट्रेंथन इट. वी नीड एक बॉन्ड जैसा बने, और आप हमारी गाइडेंस करें, आप हमारी ग्रूमिंग करें. जहां आपको लगता है ये वाला एरिया है जहां टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, उनका एक्सपोजर होना चाहिए, चेंजिंग माइंडसेट, जैसे आपने सही कहा कि वी हैव to change mindset, and HDFC and you people have definitely the role. जहां आप लोगों को लगता है you can just contact the administration, हमारा सपोर्ट होगा. हमारे यूटी के जितने भी टीचर्स हैं, इंशाल्लाह we hope कि that they will be cooperative, they will be cooperating you. आपकी जो इनोवेशंस होंगी उसको ग्रॉस रूट लेवल तक पहुंचाना हमारा काम.